rest of your voice. Yes. The matter is that how many cuts that this plant can resist, Yes. isn't it? If we tried, already there are 3 or 4 more bigger cuts over there. Yes. If we give one more, the plant will definitely get Well, could you answer the infected with question? canker. Okay. High temperature zone. So the question in this orchard is there any wound protection used on cuts? Yes, tried. I think What paint? want पे आपने कट भी लगाया था कुछ pruning के दौरान. Yeah, Chobatea paste. Chobatea paste Yeah, good. available in the market. So canker is probably, to me, the most concerning and hardest to manage disease in Himachal. You have a big range of cankers. All around the world there are cankers of apples, but in Himachal you have more species of canker pathogen than most other growing regions in the world. You have papery bark, you have smoky blight, you have pink canker, you have, give me some more, silver leaf, European canker, nailhead canker. I think 14 to 17 species, mostly fungal. Doesn't really matter what the species is. Most cankers infect through wounds. Do you need to translate? बोलो ये कैंकर पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है. पूरी दुनिया में बहुत सारे कैंकर होते हैं. हमारे भारत में जब हमने किताबों में पढ़ा है तो 13 से 14 किस्म के कैंकर तो हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं जो सेब को इन्फेक्ट करते हैं. मोस्टली उसमें जो है आपके फंगस वाले कैंकर है जो फंगस पैथोजन से फैलते हैं. क्यों होते हैं वो? मोस्टली कारण ये है कि कटिंग वॉन्ट्स एंट्री इनकी इससे है. अब ये कट पे अगर आपका प्रॉपर अगर कोई वो डिसइंफेक्टेंट नहीं लगता है या पेस्ट नहीं लगता है जो आपके बाज़ार में अवेलेबल है तो ये डेफिनेटली ओपन वॉन्ड विल इनवाइट कैंकर. ये पक्का कैंकर को इनवाइट करेगा. इसलिए घाव कभी खुला नहीं छोड़ना है. जैसे हम अपने शरीर के घाव में पहले लगाते हैं एंटीसेप्टिक कुछ, कभी हीलिंग होती है, खुला छोड़ेंगे कभी हीलिंग नहीं होगी. तो प्लांट का भी ऐसा ही है सिस्टम. I think sketches should be clean. Not so much with fungal. So good point. So can you transfer canker on sketches? If you cut through and see clean wood, not a problem. If you cut through and see stained wood, maybe consider. So we tend to sterilize our sketches between trees, not between cuts. We use bleach or methylated spirits. Methylated spirits really only works for sterilizing sketches if you mix half and half with water. If straight methylated spirits doesn't work as well. I think what we rectify spirit is Yeah, rectified spirits. Yes. जो हमारा मिलता है ना 85% वाला अल्कोहल बाजार में रेक्टिफाइड स्पिरिट जिसको बोलते हैं उससे भी आप धो सकते हैं. अगर आप स्प्रेयर में जैसा डालो जैसे आजकल हाथ के लिए आता है ना सैनिटाइज वो तो 70% है ना पर 80 वी नीड आई थिंक 85%. Yes. अल्कोहल वाला चाहिए मिनिमम 70 वाला नहीं चलेगा. उसी में डाल के आपको अगर आप इन्फेक्टेड वाले ब्रांच पे कट मारते हैं तो आप देन यू कैन वॉश योर. उस अल्कोहल से क्या हो जाता है दोनों तीनों चीजें हो जाती है फंगस बैक्टीरिया एंड वायरस ऑल विट गेट Virus, none of the viruses we worry about are transferred on sketches. They are a grafting transfer or a root grafting transfer, not a sketcher transfer. So virus don't need to worry. Sir, we have separate sketches for virus infected plants. Good, but We never use in pack sites or other sites where already we have material of virus free material. yes, good. So That will get infected and externally. let us come back to this point. Yeah. The big point about canker management is you can't spray your way out of canker. You have to prune your way out of canker. You have to prevent infection from happening in the first place. Canker builds slowly over many years, but the build-up can become very fast. So if you see any canker in your orchard, you need to manage it and remove it if possible. Doesn't matter what the species is. So can you translate that? कैंकर जो है ना पहले तो धीरे से इन्फेक्शन होगा. आपको लगेगा कि यहीं से ये सड़ रहा है
पर एक बारी उसने इनोकुलम बना लिया, उसके बाद बहुत फास्ट वो ट्री में फैलेगा और ट्री को मारेगा। अगर आप उसका हमेशा ही जब आपने कट मार, हाउ मेनी डेज वी कैन लीव दिस कट? You worry No about days. rainfall. हाउ मेनी डेज? No, realistically, Paint immediately. इमीडिएटली लगना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि कितने दिन छोड़ना चाहिए, बोल रहे इमीडिएटली लगना चाहिए भाई वहाँ पे घाव पे। Because you इसलिए may मैंने not पूछा, get back to क्योंकि हम it. पूरे बगीचे की प्रोनिंग करते हैं, पेस्ट लगाते हैं बाद। वो आते हैं कई बार बड़े ऑर्चर्ड हैं तो वो महीने बाद आती है बारी की, यहाँ पेस्ट लगाते हैं, क्योंकि हम तो लेबर को दिया है कैसे। सो Okay, so best practice says paint as soon as you make a wound bigger than fingernail. Yeah. You didn't quite reach that one. I can't see it from this We side. need a tall person. We need a ladder. जरा टॉप में लगा दो, बहुत अच्छा। ना टॉप में खींचो इसको, टॉप में लगाओ इसको, फ्रेश नहीं मारना। So what treatment you use, any of the copper-based pastes in Himachal should be effective wound dressing. So it has fungicide in it. So just straight paint doesn't do it. We've seen an orchard in Himachal who use PVA glue, wood glue, white, dries clear, and they seal their wounds. And they are very strict on canker sanitation, and that seems to protect. We prefer, because most of your cankers are fungal, we prefer paint with a fungicide in it. So paste with copper. This is New Zealand pruning paint, water-based paint, has a DMI fungicide in it. About any of them, cyproconazole, difenconazole, myclobutanol, any of them in water-based paint, 20-25 mils per litre is a good wound dressing. So ये कहते हैं हमारे आप लोग तो कॉपर करता है यहाँ पे ना मोस्टली यूज, जो हमारे बाजार में रेडीमेड मिलते हैं, पर ये लोग करते हैं फंजीसाइड, मोस्टली फंजीसाइड बेस्ड पेस्ट इन्होंने बनाया। देखो इसमें आपके स्कोर डाला है, डाइफेनकोनाजोल के नाम से आता है मार्केट में, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है। तो ये इनिशियल जो इन्फेक्शन होगा वो मोस्टली हमारे यहाँ जो कैंकर होते हैं वो फंगल बेस्ड है, इसलिए ये बोल रहे हैं कि हमारे भी फंगल बेस्ड ही पेस्ट ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसमें ये आपके फंजीसाइड यूज़ किए जाते हैं वाटर बेस्ड। So your point before about pruning trees that are diseased separately from the rest of the orchard is really important. So if you see canker in a tree, and I will demonstrate here, because if you have seen canker, it is likely to occur in that tree again. In New Zealand, we put a mark on the trunk. This year blue, next year yellow, next year red. If we see canker again, we paint again. And we prune, we scrape, we paint. If the canker gets into the scaffold wood of the tree, we might... So we cut till the wood is clean, no staining. समझे ना आप, वही था मेन इम्पोर्टेंट। अगर मोटी ब्रांच में कहीं से ऊपर से कैंकर आ जाता है तो हम कितना नीचे कट दें, तो हमें वहाँ कट देना जहाँ तक ब्रांच क्लीन आए, है ना। थोड़ी सी उससे भी नीचे ही फ्रेश होने चाहिए हमारी वहाँ वुड, वहाँ हम कट दे और तुरंत उसमें पेस्ट लगाएं। So if you have branches like this, big, you can stand a canker and it won't kill the branch, but that canker in old wood will be producing spores that may infect your young trees. Small wood, easy to girdle, easy to choke, so we have to, much more important to protect from canker infection in clonal rootstocks with small single leader wood, because the damage is more